Number H. Royalty payable by government or a person who is a resident in India except where it is payable in respect of any right, information, property used for the purpose of a business or profession carried on outside India or earning any income from any source outside India, or a person who is a non-resident provided royalty is payable in respect of any right, information, property used for the purpose of the business or profession carried on in India or earning any income from any source in India shall be income which is deemed to accrue or arise in India in the hands of the recipient. तो मान लिया जाएगा कि वो इनकम है जो कि भारत में ही हुई है. Fees for technical services provided by. Fees for technical services provided by government or a person who is a resident in India excepting where services are utilized for a business or profession carried on outside India of earning any income from any source outside India. A person who is a resident in India excepting where services are utilized for a business or profession carried on outside India or earning any income from any source outside India. ये एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन को छोड़ के कोई भी पर्सन हु इज रेसिडेंट इन इंडिया वो अगर टेक्निकल सर्विसेज देता है. A person who is a non-resident provided fee is payable in respect of services for a business or profession carried on in India or earning any income from any source in India. Non-resident है लेकिन वो सर्विसेज दे रहा है फॉर ए बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन इंडिया, भारत में कोई सर्विस दे रहा है. Shall be income which is deemed to accrue or arise in India in the hands of the recipient. ठीक है. There are special provisions for computing the profits and gains in the case of non-residents from the business of shipping, exploration of mineral oil, operation of aircrafts and civil constructions. These have been discussed under the chapter on profits and gains of business or profession. ये सब इस चैप्टर के अंदर में डिस्कस किया गया है. The concept of income deemed to be received in India or accrue or deemed to accrue or arise in India and accrue or arise outside India are not relevant for an assessee who is a resident, ordinarily resident in the case of an individual or HUF, because in their case the global income is taxable wherever received or accrued. These concepts have relevance primarily for non-residents in India, as a non-resident is not liable to pay tax on income which accrues or arises outside India and is also received outside India. If any income accrues or arises outside India but is received for the first time in India, it will be part of the total income which is taxable in India. Similarly, in case of not ordinarily resident in India, income which accrues or arises outside India and is received outside India will be taxable in India only when it is from a business controlled from India or profession set up in India. ये पैरा वही बात बोल रहा है. इस पैरा के अंदर में क्या बोलता है? ये बोला गया है
कि जितने भी तरीके की सोर्स ऑफ इनकम हो, जो भी इनकम हो, वो टैक्सेबल होगी या नहीं होगी ये लागू ही नहीं होता किसके ऊपर, उसके ऊपर जो कि रेसिडेंट है। या इंडिविजुअल और एचयूएफ को अगर हम लोग देखें तो अगर वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, अगर वो है तो जितने भी तरीके की इनकम हो, जहाँ जो भी सोर्स से हो, जहाँ पर भी मिली हो, वो टैक्सेबल है। ठीक है, इनको छोड़ करके जो नॉन रेसिडेंट है उसको लेकर के कंसेप्ट होता है कि कब कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी और कौन सी नहीं होगी। The provisions regarding incidence of tax above may be summarized in the following table। वही चीज़ को आपस से समझाने की कोशिश की गई है इन द फॉर्म ऑफ टेबल। पार्टिकुलर्स ऑफ इनकम, अलग अलग तरह की इनकम है। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जो भी तरह की इनकम होगी वो टैक्सेबल है, नो किस लिए है पता चल जाएगा। वेदर टैक्सेबल, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। ठीक है, तो अब ये चीज़ हम लोग देखते हैं। Income received or deemed to be received in India, whether earned in India or else, earn कहीं पर भी की हुई हो, लेकिन अगर वो रिसीव या डीम टू बी रिसीव इन इंडिया है तब वो तीनों केस में वो टैक्सेबल हो। ठीक है। इनकम विच एक्रूज और अराइजेज और इज डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, भारत में एक्रू अराइज हुई है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और एल्स, या तो भारत में मिली हो बाहर में, जहाँ भी हो वो तीनों में ही टैक्सेबल हो। Income which accrues or arises outside India and received outside India from a business controlled from India, बिजनेस लेकिन इंडिया में कंट्रोल हो रहा है, इन दैट केस इसमें तो टैक्सेबल होगा, इसमें भी टैक्सेबल होगा, इसमें नहीं। अच्छा, इसमें भी टैक्सेबल होगा क्योंकि ये कंट्रोल्ड है, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है। ठीक है। इनकम विच एक्रूज और अराइजेज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फ्रॉम एनी अदर सोर्स, कोई भी सोर्स से, तो रेसिडेंट में यस है और बाकी दोनों में नो है। इनकम विच एक्रूज और अराइजेज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द ईयर्स प्रेसिडिंग द प्रीवियस ईयर एंड रेमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, रेमिटेड हुआ है ये, तब ये तीनों ही केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। हाईलाइट्स ऑफ प्रोविजंस ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स, एन एनालिसिस ऑफ द अबव प्रोविजंस would highlight the following. Any income which is either received in India or deemed to be received in India is taxable in India irrespective of the residential status। जो भी residential status हो वो taxable ही है। Any income which is either received in India or deemed to be received in India is taxable in India irrespective of the residential status। ठीक है। Any income which is either earned in India or deemed to be earned in India is taxable in India irrespective of the residential status। For a resident in India, for individual and HUF resident and ordinary resident in India, all global income wherever earned received is taxable in India। For a non-resident, an income is taxable only if it is either earned in India or it is received in India। For not ordinary resident, income earned and received outside India will be taxable only when it is from a business or profession controlled or set up in India। ठीक है, ये एक illustration है, देखते हैं। The following are the particulars of income of R for the previous year 2003-04। Rent from a property in Delhi received in US, प्रॉपर्टी का है दिल्ली में है, 80,000 की, तो ये हम लोग का लिए compute his income for the assessment year 45 if he is resident and ordinary resident in India, not ordinary resident in India, non resident in India। तो ये जो पहला वाला केस है इसमें तीनों में ही ये टैक्सेबल होगा। अच्छा, इनकम फ्रॉम ए बिजनेस इन यूएसए कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से कंट्रोल हो रहा है लेकिन है ये यूएसए में, तो ये तीनों में ही टैक्सेबल होगी। इनकम फ्रॉम ए बिजनेस इन बेंगलोर
कंट्रोल फ्रॉम यूएसए, बिजनेस कहाँ है? बेंगलोर में, कंट्रोल वहाँ पर हो रहा है, बिजनेस तो बेंगलोर में, बेंगलोर इंडिया में है, तो तीनों में ही टैक्सेबल होगा। तो ठीक है। अच्छा, यहाँ नीचे वाला इलस्ट्रेशन में हम लोग देख लेंगे। रैंड फ्रॉम ए प्रॉपर्टी इन यूएसए में प्रॉपर्टी है, रिसीव्ड देयर, वो मिले भी वहाँ पर, बट सब्सिक्वेंटली रेमिटेड टू इंडिया, भारत में रेमिट हुआ, तो तीनों केस में ये टैक्सेबल नहीं होगी। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स विथ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन यूएसए, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स विथ एन इंडियन कंपनी में डिपॉजिट किया गया है लेकिन मिलता उसको यूएसए में है, तो ये रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट में टैक्सेबल होगा, बाकी दो में नहीं होगा। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 2002-03 ऑफ ए बिजनेस इन यूएसए रेमिटेड टू इंडिया इन द प्रीवियस नॉट टैक्स अर्लियर, पहले में टैक्स नहीं हुआ है। तो ये रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में टैक्सेबल होगा। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम हिज पेरेंट्स, तो टैक्सेबल ही नहीं होगा। देखते हैं अब ये सॉल्यूशन देखते हैं। इनकम अर्नड या डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, रैंड फ्रॉम प्रॉपर्टी इन दिल्ली, ये तीनों में टैक्सेबल है, ठीक है। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन बेंगलोर, ये भी तीनों में टैक्सेबल है, ठीक है। इंटरेस्ट फ्रॉम इंडियन कंपनी, ये भी तीनों में टैक्सेबल है, ठीक है। इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन यूएसए, तो ये दोनों में है, इसमें नहीं है टैक्सेबल। इनकम अर्नड एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया अदर देन टू, रैन फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूएसए में टैक्सेबल है। Profits of 2002-03 are not income of the previous year 2003-04 and hence cannot be included in the income for assessment year 2004-05. Gift received are capital receipts and are not regarded as income. ठीक है। X earns the following income during the financial year 2003-04. Interest from an Indian company received in London 1000. Pension from former employer in India received in USA 4000. Profits earned from a business in Paris which is controlled in India, half of the profits being received in India 20,000. Income from agriculture in Bhutan and remitted to India 5,000. Income from property remitted. Income from the property in England received there 4,000. Past foreign untaxed income brought to India 10,000. Compute his income for the assessment year 2004-05 if he is a resident and ordinary resident in India, not ordinarily a resident in India, non-resident in India. तो देखते हैं। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। पहला क्या है? इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, इंटरेस्ट फ्रॉम इंडियन कंपनी, तो तीनों में टैक्सेबल है। पेंशन फ्रॉम एम्प्लॉयर इन इंडिया, ये भी तीनों में टैक्सेबल है। पेंशन वाला कहाँ था? अच्छा, पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया रिसीव्ड इन यूएसए, मिला यूएसए में लेकिन एम्प्लॉय इंडिया का था, तो वो तीनों में टैक्सेबल हो गया। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया 50% ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस इन पेरिस, ये क्या था? प्रॉफिट्स अर्न फ्रॉम ए बिजनेस इन पेरिस विच इज कंट्रोल्ड इन इंडिया, हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स बीइंग रिसीव्ड इन इंडिया। इसमें ये चीज़ तो, इसमें तो 20,000 होना चाहिए था, खैर जो भी है। इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। अच्छा, ऐसे करके इसमें बांट दिया, ठीक है ठीक है। 50% द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस इन पेरिस 10,000 हो गया, 20 यहाँ नहीं आएगा।
income earned and received outside India other than 3. Income from agriculture in Bhutan, इसमें आएगा 5,000. Income from property in England, इसमें आएगा 4,000. Past foreign untaxed income has not been included because it is not the income of the previous year 2003-4. During the financial year 2003-4, Anil Kumar had the following income: salary income received in India for services rendered in Pakistan, मिला भारत में taxable. Income from profession in India but received in Germany, profession India में था taxable. Property income in Uganda में हुआ, out of which rupees 3,000 was remitted to India. तो इसमें 6,000 होगा, 3,000 होगा, ठीक है. प्रॉफिट्स अर्न फ्रॉम बिजनेस इन बेंगलोर, ये तो टैक्सेबल होगा तीनों में. एग्रीकल्चरल इनकम इन केनिया, पहले रेसिडेंट में ही होगा टैक्सेबल. प्रॉफिट्स फ्रॉम ए बिजनेस कैरिड ऑन एट नेपाल बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो दोनों में टैक्सेबल होगा. पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट्स रेमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फ्रॉम यूएसए 90,000, ये नहीं होगा टैक्सेबल. कंप्यूट द इनकम ऑफ अनिल कुमार फॉर द असेसमेंट ईयर 2004-5 इफ ही इज ए रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट इन इंडिया. क्या है देख लेते हैं. कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ अनिल कुमार फॉर द असेसमेंट ईयर 2004-5. इनकम रिसीव्ड इन इंडिया वेरेवर इट एक्रूज. सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन पाकिस्तान, ये तीनों में टैक्सेबल है. इनकम एक्रूड इन इंडिया वेरेवर रिसीव्ड. प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन बेंगलोर टैक्सेबल है. इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया बट रिसीव्ड इन जर्मनी टैक्सेबल है. इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया. प्रॉपर्टी इनकम इन उगांडा 6,000, इसी में टैक्सेबल है. एग्रीकल्चर इनकम इन केनिया 10,000, इसी में टैक्सेबल है. प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन इन नेपाल बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, दोनों में टैक्सेबल है. पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट्स रिमिटेड टू इंडिया नहीं आएगा, ये हो गया टोटल इनकम. द फॉलोइंग इज द इनकम ऑफ श्री सुधीर कुमार फॉर द प्रीवियस ईयर 2003-4. प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस इन ईरान रिसीव्ड इन इंडिया, भारत में मिल रहा है टैक्सेबल है. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन ईरान रिसीव्ड इन इंडिया टैक्सेबल है. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान डिपॉजिटेड इन ए बैंक देयर, सिर्फ इसी में आएगा, रेसिडेंट में ही आएगा. रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट में ही आएगा. प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस established in Pakistan deposited in a bank there. This business is controlled in India. Out of rupees 20,000, a sum of rupees 10,000 is remitted in India. ठीक है, 20,000. Income from profession in India but received in England taxable. Profits earned from business in Kanpur taxable. Income from agriculture in England, it is all spent on the education of children in London. जो रेसिडेंट में टैक्सेबल होगा. पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ब्रॉट इनटू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 10,000, नॉन टैक्सेबल. फ्रॉम द अबव पार्टिकुलर्स ascertain the taxable income of Sri Sudhir Kumar for the previous year 2003-4 if Sri Sudhir Kumar is a resident and ordinary resident, not ordinary resident and a non-resident. Taxable income of Sri Sudhir Kumar for the previous year 2003-4. Income received in India wherever accrues. Profits from business in Iran but received in India taxable. Income from house property in Iran received in India taxable. ठीक है. Income accrued in India wherever received. Profit earned from the business in Kanpur taxable. Income from profession in India but received in England taxable. Income earned and received outside India. Income from house property in Pakistan deposited in bank there, first case में taxable. Profit of business established in Pakistan deposited there,
बिजनेस बीइंग कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, दोनों में टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंग्लैंड, फर्स्ट में टैक्सेबल है। पास अनटैक्स फॉरेन इनकम ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तीनों में नॉन टैक्सेबल है। इसी के साथ हम लोग का सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। अभी हम लोग करेंगे थर्ड चैप्टर, दैट इज इनकम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, वैसी इनकम जो कि टोटल इनकम का हिस्सा नहीं होती है। सेक्शंस 10, 10A, 10B एंड 11 to 13A। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे करके पढ़िएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सिस्टमेटिक स्टडी से। All receipts which give rise to income are taxable under the Income Tax Act. All the receipts which give rise to income are taxable under the Income Tax Act unless it is specifically provided that it does not form part of total income. Such incomes which do not form part of total income may also be called incomes exempt from tax. As per section 10 to 13A, certain incomes are either totally exempt from tax or exempt up to a certain amount. Therefore, these incomes, to the extent these are exempt, are not included in the total income of an assessee for computation of its total income. तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे वो सब इनकम जो कि टोटल इनकम कैलकुलेशन का हिस्सा नहीं होती, वो सब इनकम को एग्जेम्प्टेड मान लिया गया है सेक्शन 10 से लेकर 13A तक के बीच में। Incomes which do not form part of total income, the following incomes do not form part of total income, total income का हिस्सा होती नहीं। क्या क्या है? Incomes not included in total income of any person, जो कि included नहीं होते सेक्शन 10 के अंदर में। Income of newly established industrial undertaking in free trade zone etc. section 10 है। Income of newly established industrial undertaking in free trade zone section 10 है। Income of newly established 100% export oriented undertaking section 10B। Income of newly established 100% export oriented undertaking section 10B। Income of certain industrial undertakings in northeastern region section 10C। Profit and gains derived by an undertaking from the export of eligible article or things section 10BA। Income from property held for charitable or religious purposes section 11 to 13। Property held for charitable or religious purposes। Income of political parties section 13A। तो ये सब सेक्शंस के अंदर में एग्जाम्पशन दिया गया है, हम लोग डिटेल में ये सब पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।